This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you are watching NTV Houston. This is Nabiha Masood. First, the headlines. ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस केसेस 20,199 हो चुके हैं। वायरस से 7,772 लोग अब तक रिकवर हो चुके, जबकि टोटल डेथ टोल 439 बताया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल कोरोना वायरस 1.85 मिलियन का नंबर क्रॉस कर चुके हैं। कंट्री वाइड अब तक 107,000 से ज्यादा पेशेंट्स की डेथ रिपोर्ट हो चुकी और 412,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। प्रोटेस्ट के दौरान पार्टिसिपेंट्स के दरमियान कम फासले, रनिंग और चैंटिंग की वजह से कोरोना वायरस फैलने के ज्यादा चांसेस हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने पब्लिक को फिर से वार्न कर दिया। फैमिली अटॉर्नी का बताना है कि जॉर्ज फ्लॉयड का फ्यूनरल ह्यूस्टन में 9 जून को अरेंज किया जाएगा। फ्यूनरल सर्विस की जिम्मेदारी फोर्ट बेंड मेमोरियल प्लानिंग सेंटर को दे दी गई है। यू आर वॉचिंग NTV ह्यूस्टन और अब न्यूज डिटेल्स। ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस केसेस 20,199 हो चुके हैं। वायरस से 7,772 लोग अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि टोटल डेथ टोल 439 बताया जा रहा है। ह्यूस्टन सिटी की बात करें तो टोटल कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस 7,743 हो चुके हैं। डेथ टोल 131 और 1,830 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। हैरिस काउंटी में केसेस 4,921 हैं। 104 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई और 3,120 रिकवरीज हैं। फोर्ट बेंड काउंटी में इस वक्त टोटल केसेस 1,881 हैं। डेथ टोल 44 और 661 पेशेंट्स रिकवर हुए। गैल्वेस्टन काउंटी में 847 लोग इन्फेक्टेड एंड 37 डेथ्स और 471 रिकवरीज हैं। मॉन्टगोमरी काउंटी में केसेस 966, 26 पेशेंट्स की डेथ रिपोर्ट हुई और 484 रिकवर हुए हैं। ब्राजोरिया काउंटी में 1,057 केसेस, डेथ टोल 12 और 497 पेशेंट्स रिकवर हुए, जबकि ब्राजोस काउंटी में 487 कंफर्म केसेस, डेथ टोल 19 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स 183 हैं। मेटागोटा काउंटी में केसेस 75 डेथ्स एंड 46 पेशेंट्स रिकवर हुए। वॉशिंगटन काउंटी में 203 केसेस, 26 डेथ्स, 71 रिकवरीज। वॉर्टन काउंटी में 53 केसेस एंड 38 पेशेंट्स रिकवर हुए, जबकि चैबर काउंटी में 68 केसेस और 58 रिकवरीज देखी गई हैं। वॉल्कर काउंटी में 1,462 केसेस, 28 डेथ्स और रिकवर होने वाले पेशेंट्स 87 हैं। वॉलर काउंटी में 58 केसेस एंड 37 रिकवरीज रिपोर्ट हुई हैं। पोक काउंटी में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस की तादाद 60 हो चुकी है और 20 पेशेंट्स रिकवर हुए। ऑस्टिन काउंटी में टोटल केसेस 24 हैं और 15 रिकवरीज देखी गई हैं। ग्रेम्स काउंटी में 122 केसेस, 1 डेथ एंड 14 रिकवरीज। कोलोराडो काउंटी में 22 केसेस, 17 पेशेंट्स रिकवर, जबकि सैन हैसिंटो काउंटी में 14 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया और 8 पेशेंट्स रिकवर बताए जा रहे हैं। जेसनर रोड पर सस्पेक्ट्स ATM से पैसे लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने पीछा करके एक सस्पेक्ट को अरेस्ट भी कर लिया है। सिक्योरिटी कंपनी ने सस्पेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन और गाड़ी की डिटेल्स HPD ऑफिसर्स को प्रोवाइड कर रखी थी। सस्पेक्ट की गाड़ी साउथ बाउंड बेल्टवे पर लोकेट हुई और पुलिस ने केटी फ्रीवे पर उनका पीछा शुरू किया। 600 एको के करीब एक शख्स ने गाड़ी से जंप किया और लोकेशन से भाग निकला, जबकि ड्राइवर गाड़ी भगाता रहा। कुछ देर परसूट के बाद सस्पेक्ट कार का कंट्रोल खो बैठा और गेलॉर्ड ड्राइव के करीब क्रैश कर गया। कुछ देर सर्च के बाद ऑफिसर्स ने ड्राइवर को तलाश करके उसे अरेस्ट कर लिया। गाड़ी से जंप करने वाले सस्पेक्ट की तलाश अब भी जारी है। यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल कोरोना वायरस केसेस 1.85 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। कंट्री वाइड अब तक 107,000 से ज्यादा पेशेंट्स की डेथ रिपोर्ट हो चुकी है और 412,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। स्टेट वाइज बात करें तो न्यूयॉर्क में टोटल 376,520 लोग इन्फेक्ट हुए और डेथ टोल बढ़कर 29,766 तक जा पहुंचा है। न्यू जर्सी में 160,918 केसेस और मरने वालों की तादाद 11,721 है। इलिनॉय में 120,666 केसेस कंफर्म हुए और 5,458 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई। कैलिफोर्निया में 113,643 केसेस और डेथ टोल 4,287। मैसाचुसेट्स में 100,805 केसेस रिपोर्ट हुए और 7,035 डेथ, जबकि पेंसिल्वेनिया में कंफर्म केसेस की तादाद
76,734 और 5,574 पेशेंट्स की डेथ रिपोर्ट हुई। टेक्सास में टोटल 68,081 केसेस और 1,695 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। मिशिगन में इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 58,435 और 5,525 पेशेंट्स की डेथ रिपोर्ट हुई। फ्लोरिडा में 56,822 कंफर्म केसेस एंड 2,459 डेथ्स, जबकि मैरीलैंड में 54,035 पॉजिटिव केसेस और 2,552 पेशेंट्स की डेथ रिपोर्ट हुई है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वार्न कर चुके हैं कि मुल्क भर में रीसेंट प्रोटेस्ट की वजह से नोवल कोरोना वायरस केसेस तेजी से फैल सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रोटेस्ट के दौरान पार्टिसिपेंट्स के दरमियान कम फासले, रनिंग और चैंटिंग की वजह से वायरस फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इन कंडीशंस में लोग रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ज्यादा इमिट करते हैं। If your skin is black, you're automatically a threat. When do we want it? Well, certainly COVID could be part of these demonstrations. And these are large numbers of people getting together closely for prolonged periods of time and often cheering and shouting. So they're exhaling with vigor. So we know that people without symptoms can spread this virus. And it's possible that in that circumstance, the COVID virus could be spread to others. And then I'm particularly concerned because, understandably, a lot of the demonstrators are people of color. That's the issue that they're demonstrating about, their concerns. And that's already a population disproportionately affected by COVID. And we wouldn't want anyone, anywhere to get sick and take this virus home to family and friends. So we're a little bit worried that indeed these demonstrations may kind of accelerate the second surge that we might be anticipating. Yeah, absolutely. I think it's a concern. We're still in the midst of a pandemic. I think in this protest, I appreciate that we all have masks on and we're trying to stay distant. And I appreciate how the organizers have really tried to emphasize safety. On the good side of the ledger is that they are outside, and that's a lower risk, and many people are indeed wearing masks, and that's also a good thing. But the behaviors, the closeness with each other for prolonged periods of time, the running about, exhaling vigorously, shouting and cheering, again, exhaling vigorously, that's a circumstance where the COVID virus could be transmitted to people in the vicinity because they are indeed close together, despite the fact that most of the time these folks are out of doors. जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत पर पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पीसफुल तो कहीं वायलेंट प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को प्रेसिडेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर डिक्लेयर करते हुए अमेरिका के शहरों में वायलेंट प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की धमकी दे दी है। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से नेशन को एड्रेस करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर गवर्नर्स ने प्रोटेस्ट रोकने के लिए नेशनल गार्ड को यूज ना किया तो वो मिलिट्री को मोबिलाइज कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस वायलेंस के सबसे बड़े विक्टिम पीस लविंग सिटीजन्स हैं, जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो हर हद तक जाएंगे। ट्रंप ने अश्योर किया कि जॉर्ज फ्लॉयड और उसकी फैमिली को इंसाफ जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक ऑडियो सामने आई है जिसमें उन्हें गवर्नर से कॉल में बात करते सुना जा सकता है। रॉयटर्स को मिलने वाली ऑडियो में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट के खिलाफ रिस्पांस को देखा जाए तो गवर्नर्स खुद को काफी वीक शो कर रहे हैं, उन्हें और भी टफ स्टैंस अपनाना होगा। ट्रंप ने कहा कि स्टेट अथॉरिटीज को डोमिनेट करना होगा, अगर ऐसा न किया गया तो प्रोटेस्टर्स सब पर चढ़ दौड़ेंगे। Situation going on, it shouldn't be hard to take care of, and we're going to take care of it. And we've got a number of people here that you'll be seeing. A lot of General Milley is here, who's head of Joint Chiefs of Staff, a fighter, a warrior, had a lot of victories, had no losses. And he hates to see the way it's being handled in the various states, and I've just put him in charge. The Attorney General is here, right here, Bill Barr, and we will activate Bill Barr and activate him very strongly. We're strongly, and Secretary of Defense is here, we're strongly looking for arrests. You have to get much tougher. You're going to get overridden. Get a lot of men. We have all the men and women that you need.
But people aren't calling them up. You have to dominate. If you don't dominate, you're wasting your time. They're going to run over you. You're going to look like a bunch of jerks. You have to dominate. And you have to arrest people, and you have to try people. And they have to go to jail for long periods of time. I saw what happened in Philadelphia. I saw what happened in Dallas, where they kicked a guy to death. I don't know if he died or not, but if he didn't, it's a miracle what they did to him. They were kicking him like I've never seen anything like it in my life. People don't talk about that. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट स्टेटमेंट के बाद नेशनल गार्ड को व्हाइट हाउस के बाहर डिप्लॉय कर दिया गया है। प्रोटेस्ट की वजह से व्हाइट हाउस के आसपास सिचुएशन काफी टेंस नजर आ रही है। व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों प्रोटेस्टर्स मौजूद रहे। प्रोटेस्टर्स हैंड्स अप, डोंट शूट और आई कैंट ब्रीथ स्लोगन रेज करते रहे। इस दौरान सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री पुलिस को आगे आना पड़ा। शील्ड्स थामे और प्रोटेक्टिव गियर पहने मिलिट्री पुलिस पर्सोनल प्रोटेस्टर्स के सामने डटे रहे। इससे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को डिफेंस सेक्रेटरी और अटॉर्नी जनरल की तरफ से सिचुएशन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है। पुलिस ब्रूटैलिटी का निशाना बनने वाले जॉर्ज फ्लॉयड की सपोर्ट में सैकड़ों लोग न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर जमा हो गए। लोगों ने जमीन पर लेटकर आई कैन ब्रीथ स्लोगन रेस करके अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली को इंसाफ दिलवाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पुलिस कस्टडी में आखिरी सांसें लेने वाले फ्लॉयड पर उस वक्त क्या गुजरी होगी, उस मंजर को प्रोटेस्ट ने एक बार फिर से दोहराया। डेमोन्स्ट्रेटर्स साइड वॉक पर लेटकर आई कैन ब्रीथ नारे लगाते रहे। प्रोटेस्टर्स ने उम्मीद जाहिर की है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से सिस्टम में कुछ बदलाव जरूर आ सकेगा। Black people and people of color, brown, they're not treated right. So it's like, you know, something has to change for the generation after me. Something has to change. People should listen to black people when they talk about these things. I think that we should be uplifting the voices of black people. I think that for hundreds of years in this country, they have been fighting for their own lives, and it's time for us to step up. They're dying in the streets at the hand of our police, and we need to change this entire system. I hope that we finally change the system. We come out here every single time that something like this happens, and we're tired of coming out. This shouldn't be something we have to do every week, every year, every 5 years. It has to end now. You go home and feel like, okay, I'm not alone. You know what I mean? Like, it's not just the black community doing this alone. You can look around and see every different kind of races out here. So it kind of makes you feel better. We don't believe in silence. Everybody should have a voice in this situation. न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू क्यूओमो का कहना है कि पूरे मुल्क में पुलिस पर चॉक होल्ड्स और एक्सेसिव फोर्स यूज करने पर पाबंदी होनी चाहिए। डेली ब्रीफिंग में गवर्नर ने सिटीजन से कहा कि वो इस मौके का फायदा उठाते हुए पॉलिटिशियंस पर सोसाइटी में बेहतरी लाने पर जोर डालें। उन्होंने कहा कि पुलिस अब्यूज की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। क्यूओमो ने कंसर्न शो किया कि पिछले कुछ दिनों से जारी प्रोटेस्ट की वजह से कोरोना वायरस इन्फेक्शंस में इजाफा हो सकता है। And now we're seeing these mass gatherings over the past several nights that could in fact exacerbate the COVID-19 spread. We spent all this time closed down, locked down, masked, socially distanced, and then you turn on the TV and you see these mass gatherings that could potentially be infecting hundreds and hundreds of people after everything that we have done. We have to take a minute and ask ourselves, what are we doing here? What are we trying to accomplish? So yes, we should be outraged. And yes, there's a bigger point to make. It is abuse by police. But it's something worse. It is racism. It is discrimination. It is fundamental inequality and injustice. If we're constructive and if we're smart and if we know what we're asking for, it's not enough to come out and say, I'm angry, I'm frustrated. Okay. And what? Well, I don't know, but I'm angry and I'm frustrated. And you want what done? And the protesters are making a point, and most of them are making a smart, sensible point. But you have to add the positive reform agenda that every voice calls for so the government, the politicians, know what to do. And there is a positive reform agenda here.
There should be a national ban on excessive force by police officers. There should be a national ban on chokeholds. Period. जॉर्ज फ्लॉयड के भाई ने लोगों से पीसफुल प्रोटेस्ट की अपील कर दी है। टेरेंस फ्लॉयड का बताना है कि लोगों को अपनी कम्युनिटीज को तबाह नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। Like it was already said, I doubt y'all half as upset as I am. Come on now, right here. Speak. So if I'm not over here wilding out, if I'm not over here blowing up stuff, Come on. if I'm not over here messing up my community, Come on. then what are y'all doing? What are y'all doing? Y'all doing nothing. Because that's not going to bring my brother back at all. It may feel good for the moment, just like when you drink. But when it comes down, you're gonna wonder what you did. That's right. Let's do this another way. Y'all right. Let's do this another way. Let's stop thinking that our voice don't matter. That's right. And vote. There you go. Not just vote for the president, vote for the preliminaries, vote for everybody. पुलिस कस्टडी में मरने वाले जॉर्ज फ्लॉयड की इंडिपेंडेंट ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आ गई है। ऑटोप्सी करने वाले 2 डॉक्टर्स का बताना है कि मैकेनिकल एक्जिफिया फ्लॉयड की मौत की वजह बना। उन्होंने फ्लॉयड की मौत को होमिसाइड करार दिया है। The evidence is consistent with mechanical asphyxia as the cause of death and homicide as the manner of death. The autopsy shows that Mr. Floyd had no underlying medical problem that caused or contributed to his death. This is confirmed by information provided to Dr. Wilson and myself from the family. He was in good health. The compressive pressure of the neck and back are not seen at autopsy because the pressure has been released by the time the body comes to the medical examiner's office. It can only be seen serious compressive pressure on the neck, and cause of death, in my opinion, is asphyxia due to compression of the neck. I said earlier that ambulance was essentially a hearse for George Floyd because based on all apparent evidence, George was dead on that scene. But for the sustained pressure on his neck and on his back, George Floyd would be alive. That's the simple premise here. फैमिली अटॉर्नी का बताना है कि जॉर्ज फ्लॉयड का फ्यूनरल ह्यूस्टन में जून 9 को अरेंज किया जाएगा। फ्यूनरल सर्विस की जिम्मेदारी फोर्ट बेंड मेमोरियल प्लानिंग सेंटर को दे दी गई है। मिनियापोलिस में मेमोरियल सर्विस थर्सडे 1 PM से 3 PM तक जारी रखा जाएगा। सैटरडे नॉर्थ कैरोलिना में मेमोरियल सर्विस अरेंज किया जाएगा। ह्यूस्टन में मंडे को पब्लिक व्यूइंग का प्लान है। ह्यूस्टन में फ्यूनरल सर्विस जून 9 को 11 AM तक एक्सपेक्टेड है। बताया जा रहा है कि जॉर्ज फ्लॉयड का फ्यूनरल का सारा खर्चा बॉक्सिंग चैंपियन फ्लॉयड मेवेदर खुद उठाएंगे। पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से मरने वाले जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर दिल उदास है। 3rd वार्ड में आर्टिस्ट ने फ्लॉयड की याद में एक मुरल बना डाला। मुरल में ब्लू बैकग्राउंड के साथ फ्लॉयड को एक हुडी पहने एंजल विंग्स के साथ दिखाया गया है। आर्टिस्ट डोंकी बॉय और डोंकी मॉम ने मुरल 3341 विंडबर्न स्ट्रीट पर लोकेटेड स्कॉटफील्ड मार्ट की दीवार पर पेंट किया है। ये स्टोर जैक जेट्स के स्कूल के करीब लोकेटेड है, जहां फ्लॉयड एक स्टार एथलीट थे। आर्टिस्ट ने बताया कि उन्हें ये मुरल तैयार करने में 4 घंटे लगे हैं। फ्लॉयड के सर पर बने एक हैलो में एक पैगाम भी मौजूद है, जिसमें फॉरएवर ब्रीदिंग इन आवर हार्ट्स लिखा गया है। Oh man, this is a blessing, you know what I'm saying? It's like the best thing. It's so amazing, you know what I'm saying? It's like man, I feel good about all the love, because it's all love, you know what I'm saying? And the love that he's getting, the impact that he did, it's all love, you know what I'm saying? So I appreciate all of it, you know what I'm saying? And the whole community and everybody, the whole family, everything. We thank everybody, you know what I'm saying? And it's all love, you know what I'm saying?
justice for George Floyd. सैन फ्रांसिस्को में एक्टर जेमी फॉक्स भी प्रोटेस्टर्स के साथ नजर आए। सैन फ्रांसिस्को सिटी हॉल के बाहर मेयर लंदन ब्रीड के साथ खड़े होकर जेमी फॉक्स ने क्राउड से एड्रेस भी किया। एक्टर ने कहा कि प्रोटेस्टर्स को ब्लैक कम्युनिटी की ट्रीटमेंट में बेहतरी लाने के लिए मुसलसल काम करना होगा। What I can tell you is that after all of this, and this is going to die down, it's just inevitable. The work is still there to be done. Those individuals cannot come back. Sabrina can't have her son. George Floyd will no longer be here. The work is still here. We have to make sure that once this is done, is that we have to try to make change occur when it comes to police brutality. And what I'm saying is this, is that there has to be a deterrent. If that man can be handcuffed and that man can sit on that man's neck for that long and feel comfortable about it, that means that he's not afraid of what's going to happen. We have to change the language. They have to be worried that I could go to jail for this. They have to respect us. They have to love us. That man cried out for his mom. और अब एक नजर ह्यूस्टन वेदर पर। That's all from now. For more updates, follow us on Facebook and Twitter and keep watching NTV Houston.